Students, how are you? Fine. So now we are going to solve question number 4. Question number 4 of exercise 6.1. So this is question number 4 of exercise 6.1. X plus y equal to w plus z. Where is x plus y? So sum of these two angle is equal to sum of these two angle. You have to prove that AOB is a line. Okay. So when you get a line, when the angle formed is 180 degree. So you can say that is angle AOB equal to 180 degree. So if you prove AOB equal to 180 degree, then you can say that AOB is a line. Okay, because the angle in the line is 180 degree. So how can you prove it? Tell me. Tell me फटाफट कैसे करेंगे? Okay. तो सबसे पहले can you say that x plus y plus w plus z equal to 360 degree. This plus this plus this plus this complete angle is 360 degree. You can name this complete angle. Is it clear? Now x plus y equal to w plus z. So here I am writing x plus y. In the place of w plus z, I am still writing x plus y because w plus z and x plus y both are equal. So in the place of w plus z, I am writing x plus y. ठीक है? Equal to 360 degree. आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे. You keep w plus z here. In the place of x plus y, आप w plus z लिख सकते हैं. You can convert either x plus y to w plus z or w plus z to x plus y as per your convenience. Now when I add, I will be getting 2x plus 2y equal to 360 degree. You can take 2 common. X plus y equal to 360 degree. X plus y. My dear student, this is into. So it becomes divide that side. So on cutting, you will be getting 180 degree. So ultimately, x plus y equal to 180 degree. Is it clear? Now, what is angle AOB from the figure? AOB is angle y plus angle x, because this angle is y, this angle is x. When you add both the angles, you will be getting AOB. Okay, actually AOB z plus w bhi hai, but I prefer x plus y because here I found x plus y. So I can write x plus y. But what is x plus y? 180 degree. AOB. You can name this as 1. Here you can write from 1. Therefore, you can conclude that AOB is a line. Is it clear? So line means whenever you say line, you have to prove that the angle is 180 degree, because 180 मतलब होता है straight. Suppose I say this is P, this is O, this is Q. तो एंगल कितना है बच्चों? 180 degree. So 180 means straight line. उल्टा straight line means 180 degree. Is it clear? Come on, write this fast. Now, my dear students, we are going to prove this angle ROS. Where is angle ROS? ROS, this angle is equal to half QOS. QOS, this is QOS. You see, QOS is composed of two angles, angle 1, angle 2. POS. Okay. So let me take first, what is angle QOS? Tell me from the figure, what is angle QOS? QOS composed of these two angles. This is SOR, this is ROQ, isn't it? So I can write angle SOR plus ROQ.
Next raw material I want POS. POS, students. So POS is what? Tell me. Don't you feel from this complete angle POR, if I remove angle SOR, अगर मैं SOR को हटा दूंगा, देखिए बच्चों, ये कंप्लीट एंगल से ये एंगल को हटा दीजिए तो आपको कौन सा एंगल मिलेगा? POS मिलेगा, राइट? सो व्हाट आई कैन राइट? POS इक्वल टू, पूरा एंगल बताइए, POR माइनस दिस पार्ट यू विल रिमूव, एंगल SOR. Is it clear? Now one more logic here. You see this is 90, this is 90. Don't you feel, I will continuously rub also, so that don't you feel this complete angle is 180 degree, angle in a straight line. So if this becomes 90 degree, what this angle? This angle will also be 90 degree. 90 plus 90, 180. Is it clear? So what I will write here? Filhal, I am just removing this. I told you, no? You have to see what you want. You need not see the entire figure. Now I want this two angle. Okay? So I can write now angle ROQ plus angle POR equal to 180 degree, linear pair. Angle ROQ, it is given 90 degree. So POR equal to 180 degree. So angle POR 180 minus 90, it is 90 degree. So I got this angle also 90 degree. Now I am extending this up and this angle is, my dear student, S. Now I am taking RHS. I am taking this entire RHS. तो मैं RHS लूँगा और ये दोनों एंगल को सब्स्टिट्यूट करूँगा, सॉल्व करूँगा, आई विल गेट दी LHS. इज इट क्लियर? तो व्हाट इज दैट? हाफ एंगल QOS minus POS. Is it clear, my dear students? Now half. Now what is QOS? I got angle SOR plus angle ROQ minus what is POS? I got angle POR. I have to put a bracket. Always after minus put a bracket. Minus angle SOR, bracket close, open, close, open, close. Now half, I am going to remove the SOR plus ROQ minus POR plus SOR. Why plus? Because minus is plus. Here the sign is plus, plus minus is minus. Is it clear? Now you see any angle is going to get cancelled or not? Tell me, my dear student. ROS is in the LHS. So this ROS and this ROS, okay, you have to add. So you will be getting RHS is equal to half. Add करिए, क्या मिलेगा आपको? 2 angle SOR. Now you see what is ROQ? ROQ, it is plus 90 degree. POR, I got angle POR as 90 degree. 90 cancel. So I am getting half inside bracket 2 angle SOR, 2 cancel. I am getting angle SOR, which is actually ROS, which is actually LHS. Therefore I got LHS equal to RHS. Is it clear, my dear students? So it's very simple. कुछ नहीं करना है आपको. और एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ फटाफट. आपको निकालना है QOS, जिसमें ये एंगल है और ये एंगल है. ओके. उसके बाद आपको निकालना है POS. POS में ये पूरा एंगल को लेके ये ऊपर के एंगल को माइनस कर देंगे तो ये आपको POS निकल जाएगा. इज इट क्लियर? उसके बाद इफ दिस इज 90, दिस टोटल एंगल विल बी 90 एज पर लीनियर पेयर. आपको इसको पूरी तरह से भूल जाना है. देखिए वही चीज़ देखिए जो आपको देखना है, सबको मत देखिए. ओके. अब मैं बना देता हूँ.
So this is S. Now what you will do? Now you will take the RHS, you put all the values, and ROQ is 90, ROP is 90. 90 90 put करके cancel करेंगे, 2 cancel करेंगे, you will get the answer. So it's very simple sum. Okay, my dear student. Okay, I'm giving you some time. Kindly write this note first. Students, how are you? Fine. So now we are going to solve question number 6. Okay, question number 6, exercise 6.1. Now you see x, y, z is 64. So I am drawing. Okay, so this is, you take this as x, this is y, and this is z. This is how much? 64 degree. xy is produced to P. So you are producing xy to a point P. YQ bisect angle ZYP. ZYP. So this ZYP is bisected by YQ. And bisector is very important, very simple, you know. It simply cuts the angle into 2 equal halves. Okay. So that means this half and this half are going to be equal. You have to find XYQ. XYQ. XYQ, you know, consists of 2 angles. This angle and this angle. So you have to add these 2 angles. Is it clear? Next is reflex QYP. QYP. And the reflex, you know, it is 360 degree minus angle QYP. And you know both the angles are equal because they are being bisected. Okay. तो मैं आपको एक एक ट्रैक बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए. नाउ दिस इज 64 माय डियर स्टूडेंट. ये टोटल एंगल कितना होगा बताइए. फिलहाल फॉर द टाइम बीन इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए. तो बताइए कितना होगा, बिकॉज यू नो दैट सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री. यू कॉल इट एज ए लीनियर पेयर. सो दिस विल बी, दिस एंगल विल बी 180 माइनस 64. ओके, हाउ मच? दिस विल बी 116. ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है ये है 116. ठीक है बच्चों, 116 को नाउ यू आर बाइसेक्टिंग. यू आर बाइसेक्टिंग. सो बाइसेक्टिंग मीन्स 112 इफ यू डू divided by 2, how much you are going to get? You are going to get 56. So my dear students, this angle will be 56 degree and this angle will be 56 degree. Is it clear? Now what is XYQ? XYQ will be 56 plus 64. Okay, how much? 56 plus 64, it will be 120. It will be 120. Is it clear? Now reflex angle QYP. QYP, reflex is the back angle from here till here. You call this angle as reflex angle QYP. QYP, which is 360 degree minus angle QYP. तो मुझे तो समझ में आ गया. तो बताइए एक एक ट्रैक. सबसे पहला ये 64, ये 64 से ये पूरा कंप्लीट एंगल निकल गया विच इज़ 112. दिस इज़ द एंगुलर बाइसेक्टर. इज इट क्लियर? सो 112 इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, 2 equal halves. So this is 56, this is 56. And angle XYQ, angle XYQ consists of 2 part, this plus this. Okay, and reflex is nothing but 360 minus this. ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिए. सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? You can say that YPX is a line and YZ is a ray. Okay, don't see complete figure, you get confused. You see what you want. Okay, अब मेरे को ये पोर्शन नहीं चाहिए, ये पोर्शन बिल्कुल नहीं चाहिए. So that means you can write, see, I want this, this is P, this is Y, this is X, and this angle is 64 degree. I want this angle. The name is PYX and its name is Z. So what can you write?
एंगल पी वाई जेड। देखिए रियलिटी में दिस इज द फिगर, बट फ्रॉम दिस फिगर यू हैव टू सी लाइक दिस। आपको ये फिगर को इस तरह से देखना है, यानी आपको ये जो लाइन है, ये जो रे है, इसको आपको देखना नहीं है। तो जो चाहिए बच्चों उसी को देखिए, सबको मत देखिए। सो व्हाट कैन यू राइट, पी वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, यू विल कॉल एज लीनियर पेयर। नाउ पी वाई जेड प्लस 64 180 डिग्री, पी वाई जेड इक्वल टू 102 डिग्री, पी वाई जेड इक्वल टू 102 डिग्री। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट यू विल डू, अब इसको मीट देते हैं भाई, मीट दिया मैं। अब आपको कौन सा हिस्सा को देखना है, नाउ टेल मी। नाउ यू हैव टू सी दिस पार्ट, नाउ यू हैव टू सी दिस पार्ट। व्हाट इज दिस पार्ट? दिस इज जेड, this is P, this is Y. I am just bisecting it. So total part is how much? 112. So this will be half and this will be half because this is the angular bisector. So what you will write? Tell me. YQ. You can write YQ bisects angle PYZ. Angle PYZ. Therefore PYQ angle PYQ equal to angle QYZ equal to 112 by 2. This is how much? 56 डिग्री। तो आपने इस पार्ट को देखा, करेक्ट। उसके बाद बताइए आपको क्या चाहिए। वेरी सिंपल। नाउ यू वांट टू फाइंड एक्स वाई क्यू, आपको निकालना है एक्स वाई क्यू। तो बच्चों एक्स वाई क्यू में दो एंगल हैं, टू एंगल, वन इज एक्स वाई जेड एंड अदर इज जेड वाई क्यू। तो यू कैन राइट एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। व्हाट इज एक्स वाई जेड? 64 and this is 56. Answer is 120 degree. Okay, next you want reflex angle, what? QYP. QYP. So what is reflex angle QYP, my dear students? You know 360 degree minus QYP. Okay, so 360 degree minus what is QYP? 56 degree. Okay, and the answer you are going to get is 304 degree. Is it clear? So this is again a very simple question. आपको बस once again small revision for this question. ये 65 दिया है, ये 65 से पूरा एंगल निकालेंगे which is 112. ये बीच से आपने काट दिया इसको, आधा इधर आधा इधर, जो आधा इधर है वो 56 और ये 56। आपको ये पूरा एंगल निकालना है जिसमें 56 प्लस 64 है, और आपको 56 का रिफ्लेक्स निकालना है विच इज़ 360 डिग्री माइनस 56। दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट दिस सम। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट।